Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रायोफाइट्स। हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड द फर्स्ट क्लास दैट इज लिवर्वर्ट्स। हमने लिवर्वर्ट्स की स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन दैट ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, बट नाउ वी विल टेक अ लुक onto the next class that is mosses. So let's start about the mosses. Now let's discuss about mosses. मॉसेस के बारे में जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि दीज आर द प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर। दे हैव लीफी स्ट्रक्चर आल्सो, जैसे कि लिवरवर्ट्स दे रिमेन अटैच्ड टू द सरफेस वेयर दे ग्रो, व्हेयरएज द मॉसेस दे ग्रो वर्टिकली, ये वर्टिकली ग्रो करेंगे। सो दीज मॉसेस आर दे आल्सो ग्रो ऑन टू द प्लेसेस वेयर द damp और the moisture is present, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, ये भी वहीं पे ग्रो करेंगे एंड ये ग्रो करके वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसे हम बोल सकते हैं ग्रीन क्लम्प्स और मैट लाइक स्ट्रक्चर, कि कोई भी वाटर की नियर जहाँ पे मॉइस्चर एरिया है वहाँ पे पूरा उस सरफेस पे मैट जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे these mosses and they looks very beautiful. Next thing that they usually composed of simple leafy structure. इनके अंदर लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, लीफी स्ट्रक्चर है, जबकि लिवरवर्ट्स में हमने कोई लीफी स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी, but they have leafy structure which remain attached on a erect stem. एक erect stem के ऊपर attached रहती है। देखिए अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर की बारे में, suppose these are the rhizoids, these are the root like structures which are the rhizoids. ये rhizoids हैं and these rhizoids has leaf like structure. यहाँ पे leaf जैसे structures present हैं, they have leaf like structure and on these leaf like structure and this erect structure, this is the sporophyte. This is the sporophyte. यहाँ तक जितना पार्ट है that part is known as gametophyte. This is the gametophyte and the upper part this is the sporophyte. ये sporophyte है क्योंकि हम जानते हैं कि in the bryophytes the gametophyte bears the sporophyte. gametophyte के ऊपर ही उसके साथ attached ही sporophyte present रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं that in the case of mosses that leafy part, यहाँ तक का leafy part है that is gametophyte and on the gametophyte that structure is sporophyte and we know that it has three parts. sporophyte के three parts होते हैं, like liverworts also they have three parts, that is foot, seta and capsule. So this is that part जिससे ये gametophyte से attached रहेगा, that part of the sporophyte is known as foot, इसे हम कहेंगे foot and that is seta and this upper part is known as capsule. This is the capsule part and in this capsule part the spores are formed which give rise to new gametophyte or new thallus. So this is the gametophyte of mosses. This gametophyte of mosses is the dominant stage in the mosses or all bryophytes. This gametophyte consists of two stages. ये दो stages में मिलता है gametophyte. कौन सी वो stages है एक बार हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इसके बारे में। That this gametophyte is consists of two stages. The first one, gametophyte. It consists of two stages. The first one known as protonema stage. First का नाम है protonema stage. And the second stage is known as leafy stage. Leafy stage. Now what happens after the germination of spores? जब spores germinate होते हैं, spores के germination होने के बाद directly gametophyte form नहीं होता process में. After germination of these spores, a structure is formed which is known as protonema. इस तरीके से एक structure बनती है जिसे बोलते हैं protonema. And this protonema, this protonema will grow further and it becomes branched structure. ये green branched structure की form में grow करता रहेगा. ब्रांच्ड होगा मींस यहाँ पे ऐसे आप ब्रांचेस भी दिखा सकते हैं। इट्स अ ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर्स व्हिच ग्रो, इस तरीके से ग्रो करता रहेगा ब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्म में। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर इन दिस प्रोटोनीमा,
after when it becomes much branched or we can call it the secondary protonema, जब हम इसे secondary protonema कह सकते हैं, उस time पे from this secondary protonema a lateral bud or we can say a lateral bud like structure will form from where the leafy stage will originate or develop. So we can say that this leafy stage it develops from the secondary protonema as a lateral bud. So it's develop from सेकेंडरी प्रोटोनीमा. अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा का मतलब यहाँ पे यही है कि जब प्रोटोनीमा बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, बहुत ब्रांच हो गया है, इसने बहुत फूड स्टोर कर लिया है क्योंकि ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करेगा, so that form food. So when it stored food, it becomes much branched. It called as secondary protonema, and from this secondary protonema, this leafy stage grow as a lateral bud. So it develop from secondary protonema as lateral bud. ये lateral bud की form में ग्रो करेगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रॉम एनी पार्ट, यहाँ पे कहीं से भी किसी भी पार्ट से यहाँ से लिटरल बर्ड की फॉर्म में द लीफी पार्ट ऑफ लीफी स्ट्रक्चर, दिस लीफी स्टेज कैन ग्रो दिस इज इन दिस वे. लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसी बनती रहेगी एंड दिस लीफी स्ट्रक्चर इज नॉन एज this is the leafy stage of the gametophyte. This leafy stage of gametophyte has rhizoids. इसमें rhizoids होंगे and these rhizoids are multicellular rhizoids. This leafy stage which grows from the secondary protonema as a lateral bud, it consists of rhizoids which are multicellular. So these are the rhizoids and these rhizoids are multicellular, and in these rhizoids some septas are found and these septas are oblique septa. Like जैसे मान लीजिए इसके अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो इसमें जो सेप्टास होंगे वो स्ट्रेट ना होके ऑब्लिक होंगे, मींस इस तरीके के सेप्टास मिलेंगे इन राइजोइड्स के अंदर. So we can say that the gametophyte of the mosses is formed into the two stages or it can be found into two stages. दो stages पे gametophyte मिल रहा है. First is the protonema stage and another one is the leafy stage. Protonema जो है स्पोर के जर्मिनेशन से बन रहा है. This is the spore. When it germinate, it give rise to protonema. प्रोटोनीमा जो है वो फंगस की हाइफी जैसे स्ट्रक्चर है, जिसे हाइफीज ग्रो करके माइसीलियम बनाते हैं. सेम टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है जिसे हम प्रोटोनीमा कह रहे हैं. बट ये डिफरेंस क्या है? इट्स अ ग्रीन स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स कंटेन क्लोरोफिल. व्हेन इट बिकम ब्रांच्ड और इट कॉल इट सेकेंडरी प्रोटोनीमा फ्रॉम दिस लीफी स्टेज develop as a lateral bud. This leafy stage develop होगी and this leafy stage has rhizoids which are multicellular and has oblique septas. This leafy stage also consists of 6 organs. इसी leafy stage के ऊपर 6 organs भी present होंगे. तो जो 6 organs हैं वो present होंगे इस leafy stage के ऊपर. It consists of 6 organs. Now sporophyte की अगर हम बात करें, this sporophyte holds it in capsule and inside the capsule some specific cells are present which forms the spores. उन्हीं spores से फिर आगे germination होगा and again these spores will first they will form the protonema stage. पहले बनाएंगे protonema and then from protonema the leafy stage of the gametophyte is arises और फिर उस पे 6 organs present रहेंगे. तो इस तरीके से एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है जिसे हम बोल रहे हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. एंड दिस अल्टरेशन ऑफ जनरेशन व्हिच इज फाउंड इनटू द ब्रायोफाइट्स इट्स नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं बिकॉज यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है दैट इज द डोमिनेंट स्टेज and it consists the sporophyte which is diploid in nature and they are present into the same time at the same time of the individual. एक ही टाइम पे दोनों स्टेजेस प्रेजेंट रहती हैं बट गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड सच टाइप ऑफ अल्टरेशन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन. Now let's discuss about the reproduction into the mosses. Reproduction in mosses. When we talk about the reproduction, here also we can say that mosses can also be reproduced by asexual and sexual, both means. Here asexual is also by vegetative reproduction. So asexual जो reproduction होगा वो होगा vegetative. Asexual and another one is sexual. So both type of reproduction is present here. Asexual reproduction, the way by which it can do a sexual reproduction is vegetative
रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा एंड वेजिटेटिव में अगेन द मेथड इज सेम, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन. And another way by which it can do a sexual reproduction is budding in the protonema. The bird can be arises budding in secondary protonema. So by this way also it can give a sexual reproduction. Sometimes the secondary protonema give rise to a bud, and this bud is able to give rise to a new gametophyte or new thallus. So this is the way by which it can do asexual reproduction. For sexual reproduction, again it has both male and female sex organs which form male gamete and female gamete. Male gametes are again the same, that are the antheridium male sex organ is antheridium, and the female is archegonium. And in antheridium, the anthrazoids are formed. Again, the same thing. Anthrazoids बनेंगे, and here the anthrazoids are again biflagellate. यहाँ पे भी anthrazoids biflagellate होंगे. Flagellated, but structure is club shaped. They are club shaped. Club shaped biflagellated anthrazoids. And the archegonia, it produces egg, which is the female gamete, and it is a flask shape. Flask shape structure होती है, जैसे हमने पहले देखी थी in the liverworts, and this flask shape structure के अंदर present रहेगा egg. Same वही चीज है, the neck है, venter है, and this is here. This flask shape structure के अंदर egg present होगा, which is the female gamete, and the anthrazoids are formed into the antheridia. And these two sex organs are present onto the gametophytes. एक gametophyte पे present है. And for the fusion, जैसे fusion होगा, after fusion they will give rise to the zygote. Zygote बनेगा, दोनों के fusion के बाद they will give rise to zygote. Zygote is formed, which is 2N diploid structure. This zygote will form, and this zygote will now will initiate the stage that is the sporophyte. Sporophytes, it arises as sporophyte, and these sporophytes do not divide at the same time. उसी टाइम पे डिवाइड नहीं करेगा, जाइगोट के कुछ टाइम बाद डिवाइड कर, जाइगोट जो है कुछ टाइम बाद डिवाइड करके they will form that spores. So here we can say that after some time, some cells of these sporophytes, some cells of sporophytes, they divide, and they divide by meiosis. यहाँ पे याद रखने वाली बात है, they divide by meiosis. यहाँ पे meiosis division होगा, and by meiosis the spores are formed. यहाँ पे spores बनेंगे. They will give rise to spores, and these spores they will germinate. After the germination of these spores, they give rise to protonema. They will form protonema, and then these protonema give rise to the again this gametophyte, which contain the male and female sex organ. तो इस प्रोटोनिमा से हम बोल सकते हैं कि इसी के बाद यहाँ पे इसके डेवलप होने से ही फिर gametophyte बनेगा. This is the first stage of the gametophyte, and this protonema later on give rise to the leafy gametophyte, and this leafy gametophyte which contain the both sex organs, that is male sex organ and female sex organs. So this is about the life cycle. Here in this way we can show the life cycle also. That gametophyte contain sex organs, male and female, which forms the gametes. Gametes get fused, they form the zygote form the sporophyte, and in sporophyte some cells do division by meiosis, and after meiotic division they form the spores. After germination these spores form the protonema, and these protonema give rise to the leafy stage of the gametophyte, which again bear the sex organs. So here we can see that this is the life cycle of the mosses. Here what difference is there? Liverworts में हमने देखा था कि spores directly germinate होगी gametophyte बनाते हैं, but here after the germination of the spores, one intermediate stage, one stage is formed that is known as protonema. एक filamentous green filamentous stage बन रही है जिसे हम protonema नाम देते हैं. After that the gametophyte, the leafy gametophyte will form. So this is about the mosses.
and we have completed the bryophytes in discussion of these two classes, that is liverwort and mosses. Now let's take a look on some economic importance of these bryophytes. Importance of bryophytes. When we talk about the importance, the first thing that we can say that they help into the soil protection. They help in soil protection. अब soil protection में कैसे help कर रहे हैं? They form a mat-like structure onto the soil. Soil के ऊपर एक mat जैसे structure बना रहे हैं और उसकी वजह से ये बहुत closely packed होते हैं and they are forming a mat. By this the soil get attached. Soil जो है जुड़ी रहती है and it prevents the soil erosion. तो ये soil erosion को prevent करते हैं. They prevent soil erosion by making the mat onto the soil. This is the one important. Second thing we can say that they help into the soil formation. Soil formation में help करेंगे. They are known as pioneers of the land plants. यानी कि ये वो plants हैं जिन्होंने land पे survive करना सीखा है. यही जो plants है in ये rocky surfaces पे we can say that at the rocky surfaces where they start the succession कि life को जो start कर रहे हैं rocks पे वहाँ पे इन्हीं plants की वजह से ही life start हो पा रही है and they form the soil at these rocky surfaces. So they help in soil formation also. Next important role is that sphagnum, that is the important moss sphagnum. I already talked about you that it's very important. This sphagnum has very high water holding capacity. ये बहुत high amount में water को hold कर सकता है, जो water retention बोल सकते हैं कि water को अपने अंदर रोक के रखना है. That capacity is higher, so it has high water retention capacity. High water retention बोल सकते हैं या holding बोल सकते हैं. इस capacity की वजह से now what happens? These mosses, this sphagnum is used as a packing material for the transportation of plants and seedling. कभी भी किसी गार्डनर को प्लांट्स और सीडलिंग को ट्रांसपोर्ट करना है तो ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने से डेड हो जाएंगे, तो इनकी जो पैकिंग की जाती है वो स्फेग्नम के साथ की जाती है. स्फेग्नम वाटर होल्ड करके रखेगा एंड इट प्रोवाइड द moisture to these plants in seedling. In this way we can protect these plants in seedling. So it has very high water holding capacity and used as packing material और packing material की form में use होता है. So this is important too. The another important role of this sphagnum is it is used as a fuel. This sphagnum is also used as a fuel. This sphagnum it grows into the acidic and marshy area. It grows in acidic and marshy area. वहाँ पे grow करता है और वहाँ जब after the death of these mosses, this bryophytes जब ये dead हो जाएंगे तो इनका fossilization होगा. They will convert into the fossils, and by this formation of fossils we can get the fuel from this. They are converted into the fuel. तो जब ये fuel sphagnum जो है dead हो जाएगा, carbonize हो जाएगा, high pressure की वजह से, temperature की वजह से, it will convert into the fuel. ये fuel में convert हो जाता है and we can extract it and we can this fuel is known as pit. यहाँ पे that is known as pit. We can take off this pit and we can means break it into the blocks. ये इसको cut करके spread हुआ है soil के ऊपर and this pit can be used as a block. और blocks को हम fuel की form में use कर सकते हैं and by this formation of this pit, this sphagnum is also known as pit moss. इसका जो दूसरा नाम है sphagnum का is also known as pit moss. इसे pit moss भी हम बोलेंगे and this pit is can be used as a manure also. इसे manure की form में भी use किया जा सकता है. So in this way you can see that these bryophytes are very important as an economic point of view also. So this is all about these bryophytes. Next we will discuss about the pteridophytes. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.